Hello class 10th ITians. Let's revise Unit 4 Web Applications Complete Revision. Question 1. Due to pandemic, everyone was bound to stay at home, but due to internet, the whole world was connected. What is meant by the World Wide Web, also written in two web browser name? देखो पैंडेमिक में सभी घर पर थे लेकिन इंटरनेट की वजह से सब जुड़े हुए थे, अलग अलग भी थे, जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम of interlinked hypertext document web pages accessed via the internet. Examples of web browsers: Google Chrome's, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Netscape Navigator, Opera Mini, Safari, etc. B part is explain how data is transferred over internet. डेटा किस तरह से ट्रांसफर किया जाता था? And answer is data is transferred over the internet by following steps. Data SAN is broken into the packets. Each packet डेटा क्या होता है जब ट्रांसफर हो रहा होता है उस समय कुछ पैकेट्स में टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है, एक साथ पूरी फाइल ट्रांसफर नहीं होती है. Each packet is sent from the computer to computer until it finds its destination. All the packets will not take the same route. Same size के नहीं होते तो same route नहीं लेते हैं. At the destination, the packets are examined. If the packets are missing or damaged, message is sent asking for them to be resent. This continues until all the packets have been received intact. The packets are now reassembled into their original form. इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है. Aaron is too much worried when he came to know that someone has withdrawn all money from his uncle's bank account. He was not able to understand how this could happen when he has not given his ATM card to anyone. अब आर्यन काफी परेशान हो रहा है कि उसके अंकल के अकाउंट में से पैसा निकल गया जबकि उन्होंने अपना ATM कार्ड भी नहीं दिया. तो ये कैसे हो सकता है? Suggests him a way by which he can assure that he is not doing secured online transaction. देखो ये कई बार हम क्या करते हैं, ऑनलाइन थ्रेड्स में फंस जाते हैं. तो अगर आप कोई सिक्योर साइट नहीं ले रहे हो तब आप अपनी आईडी पासवर्ड लीक कर रहे हो, तो हमारे इनको सजेस्ट करेंगे that he can be assured that he is doing the secured online transaction by checking digital certificate represented as a golden lock, padlock in the web browser address bar or URL. He can check if the website uses the HTTPS Hypertext Transfer Protocol secure protocol. Okay. The next question is which type of software he need to install in his computer to protect his computer from malware. वो कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है जिससे वो मालवेयर से बच सकता है. He can install antivirus, anti-spyware software. Help him to understand about the phishing. अब हम उसे phishing की डिफाइन बताएंगे. Phishing is the act of acquiring the personal, private or sensitive data from personal computer for use in fraudulent activities. Any valid examples like mail, message from unknown person that may ask for your credit card, debit card detail, आधार कार्ड, पर्सनल डिटेल. तो कोई भी इस तरह का अगर आपको इंफॉर्मेशन इंटरनेट में मांग रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपके लिए जाल डाल रहा है. फिश जैसे पकड़ते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड फिशिंग. कि आपको एक लालच दिया गया कि आपकी लॉटरी निकली, आप फॉर्म भर रहे हो, अपना आईडी, पासवर्ड, बैंक डिटेल सब फिल कर रहे हो और फिर क्या होता है कि आपके बैंक से सारी मनी विड्रॉल कर ली जाती है. He also think cookies are harmless. अब आर्यन को क्या लगता है कि कुकीज जो होती है वो हार्मलेस होती है. Explain how cookies can be cause harm to it. अब हमें ये बताना है
कि कुकीज किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकती है। Cookies can cause the harm to him as they can be tracked by unauthorized user or possibly gain access to his personal information. कुकीज क्या होती है, जब आप कोई इंटरनेट पे कहीं पे भी एक्सेस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सारा आईडी पासवर्ड एक फाइल में आपके सिस्टम पे सेव होता रहता है। ठीक है, तो जहां जहां आप जा रहे हो तो बेसिकली कुकीज आपको ट्रैक कर रहा है। तो अगर आपके सिस्टम में एंटी स्पाईवेयर नहीं है तो एक स्पाइस ऑफ आ गया इसमें अंदर, और वो क्या कर रहा है, आपके सिस्टम के सारे पासवर्ड उस लीक करके हैकर्स को प्रोवाइड कर। डिफरेंशिएट बिटवीन द लैन वैन विथ 2 पॉइंट ओनली। देखो 2 पॉइंट बोले हैं, यहाँ 3 में हम समझते हैं। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। LAN क्या होता है? A LAN is a network which connect computer and devices in a limited geographical area. और WAN is a network which connected computer and devices over a broad, large geographical area. हम पूरे वर्ड कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं LAN के: इंट्रानेट, any network at the room, home, school, computer lab, office building and closely positioned group of buildings. WAN का है इंटरनेट, any network that linked across the metropolitan, regional और national boundaries. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the special name given to the discussion style site used by non-technical or technical users for the creating personal web page? Give any 2 examples of website that help us to create such discussion स्टाइल साइट्स फॉर फ्री। हमें ऐसी कोई साइट बतानी है जिसमें कि कोई भी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर दोनों तरह के यूज कर सकते हैं और अपने सजेशंस लिख सकते हैं। इसे हम ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग इज अ स्पेशल नेम गिवन टू द डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय द नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर फॉर क्रिएटिंग द पर्सनल वेब पेज। ओके, और कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमें ब्लॉग की फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि www.wordpress.com, www.blogger.com, www.blog.com, www.weebly.com, www.blogsum.com. Write any 4 rules which are to be followed for creating strong password. Strong password के लिए हम क्या कर सकते हैं? Following are the general rules to be followed by the creating strong password. देखो बहुत सारे पॉइंट बताए मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हो। नंबर 1, कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड 12 to 14 कैरेक्टर इफ परमिटेड। जितना देखो कहीं में ना 8 to 9 भी दिया होता है, तो हमें 8 to 9 कैरेक्टर कंप्लीटली सारे कैरेक्टर लेने चाहिए। Avoid keeping the password based on repetition, dictionary word, letter, number, sequence, username, relative, pet name। तो कोई भी easily guess वाला पासवर्ड नहीं होना चाहिए। Including the number, symbol in password if allowed। अगर आपको परमिशन है तो आप सिंबल और नंबर दोनों यूज करो। यूज कैपिटल, अपर केस, स्मॉलर, लोअर केस दोनों यूज करो। Avoid the using the same password in multiple site और पर्पस। अलग अलग साइट में सेम पासवर्ड यूज मत करो। Avoid using something that public and formats know you strongly like or dislike। कोई ऐसे वर्ड मत यूज करो जो कि लोगों को लगता है कि तुम्हारा फेवरेट वर्ड हो। Use random password generate if possible। Use combination of alphanumeric special character। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या हुआ? GEN, कैपिटल X, कैपिटल H, D, हैश, $123। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड क्रिएट करो। ओके, डैश इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव एंड मिनिमाइज द हेल्थ लॉस till the proper medical aid facility is provided, and that is called first aid या स्कूल मेडिकल रूम। ओके, तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द injured to save the life and minimize the health loss till the proper medical aid and facility is provided. Name the software or hardware।
security device that analyze the network traffic and determine if the traffic should be allowed or not. That is firewall. Firewall is a software or hardware security device that analyze the network traffic and determine if the traffic should be allowed or not. मतलब अगर कोई corrupted फाइल आ रही है, कोई वायरस वाली आ रही है, तो वो आपको मैसेज दे देगा. Dash is an organization which provide you with access to the internet via a dial-up or direct or wireless connection. And answer is Internet Service Provider (ISP) is an organization that provides you with access to the internet via dial-up or direct or wireless connection. And name is BSNL, MTNL, Airtel, Jio, etc. State any 4 rules and etiquettes to be followed while chatting on the internet. Rules or etiquettes to be followed while chatting on internet. Messages should be short and to the point. Always introduce yourself by name if your screen name does not get reflected. Always ask if the other person has time to chat first, regardless of how important you think what you have to say is. In a business environment, know exactly what you want to discuss. Typing a message in uppercase is extremely rude. It's considered shouting and very aggressive. Give people time to respond. It's important to properly end and IM instant messages conversation. You may think the chat is over, but the other person may not. तो नॉर्मली जिस तरह से हम बात करते हैं तो उसी तरह से हम इंटरनेट पे चैटिंग करेंगे, तो दैट इज आवर एटिकेट्स, हमारे मैनर शो करेगा. ओके. What is client and server architecture? Client and server architecture are network in which the certain computer have the special dedicated task providing the service to other computer are called client servers computer. तो ऐसा कंप्यूटर, ऐसा नेटवर्क जहां पर एक मेन कंप्यूटर होता है और बाकी सब सिर्फ सर्विस ले रहे हैं. ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं द कंप्यूटर विच प्रोवाइड द सर्विस इज कॉल्ड सर्वर एंड द वन दैट यूज द सर्विस इज कॉल्ड क्लाइंट. तो यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट की भी आप डिफाइन साथ में दे सकते हैं. द मॉडल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू एप्लीकेशन प्रोग्राम इन विच अ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड क्लाइंट request a service program at the other hand that is called server. Network in which certain program, computer program and special dedicated tasks provided to the service to the other computer in a network are called client service server network. The computer which provide the service are called server and the other one that use the service are called client. तो आपको जो लाइन इजी लगती है आप वो लाइन एग्जाम में लिख सकते हो. डिफाइन द वर्म. What is worm? These are the viruses that replicate themselves and spread to all the files. Once they attack a computer, this make it very difficult to remove it. आप ये भी लिख सकते हो था a worm is a self-replicated computer program. It replicates continuously until the entire hard disk space and memory are eaten up. It may do so without any use of intervention. देखो जिस तरह से worms मतलब कीड़ियां, तो आपके घर में जैसे क्या होता है, एक चींटी आती है और वो बढ़ जाती है. तो ये इसी तरह से करता है कि फाइल डबल होती रहती है, अपने आप का अपना डुप्लीकेट बनाती रहती है
तब तक बनाती रहती है जब तक कि आपकी हार्ड डिस्क की पूरी स्पेस ही फुल ना हो जाए। To create a strong password, we should use number, capital and small letter and some symbols. If allowed, is it true or false? Yes, that is true. The next question is, mouse key is an accessibility feature that assists people who have difficulty using a mouse. Is it true or false? Yes, that is true. Now this is MCQ. Which of the following is not a wireless technology? इसमें से कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है? ठीक है, DSL, 3G, WiMAX, Wi-Fi. And the right answer is DSL. देखो, अगर DSL वायरलेस नहीं है तो दैट मीन्स कि जो बाकी है वो वायरलेस है, 3G, WiMAX एंड Wi-Fi. ओके, तो आपने दो क्वेश्चन रिवाइज कर दिए. फुल फॉर्म ऑफ ISP, Internet Service Provider. Dash is an accessibility function which is designed for the people who have the vision impairment or cognitive disability. Options are toggle key, filter key, sticky key, serial key. Check your answer, and the right answer is toggle key. Toggle key is an accessibility function which is designed for the people who have vision impairment and cognitive disability. Dash is an accessibility feature that assists the people that have the difficulty using the both keyboard or a mouse. कीबोर्ड और माउस दोनों ही यूज नहीं कर पा सकते. तो ऑप्शंस आर टॉगल की, फिल्टर की, स्टिकी की और सीरियल की. चेक योर आंसर, एंड द राइट आंसर इज टॉगल की इज serial key is an accessibility feature that assists people that have the difficulty in using keyboard और mouse. तो जहां पर दोनों ही यूज नहीं कर पाते कीबोर्ड माउस, तो वो सीरियल की है. Explain the client server architecture and peer to peer architecture. Client server क्या होता है और peer to peer क्या होता है? Peer to peer architecture the network in which all the computer, peer to peer में क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर सेम उनकी मतलब स्टेटस होता है. तो have the equal status are called the peer to peer network. In peer to peer network, each terminal has the equal component CPU. Network in which one computer is connected to the another is directly when two more computers connected to each other and there is no client or server between them. ठीक है, एंड क्लाइंट एंड सर्वर हमने पीछे अभी रिवाइज कर लिया था कि जहां पर एक मेन कंप्यूटर क्लाइंट होता है जो कि सब बाकी कंप्यूटर्स को ऐसा नेटवर्क a network in which a main computer provide the service and other use its service. Explain any three type of impairment that impact computer users. There are numerous type of impairment that impact the computer users. कई तरह की बीमारी होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर की सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है. The first one is cognitive impairment and learning disability such as dyslexia, attention deficit hyperactive disorder, ADHD या autism. Second is visual impairment such as low vision, complete or partial blindness and color blindness. And next is hearing impairment including the deafness and the physical motor dexterity impairment such as paralyzed, cerebral palsy, carpal tunnel syndromes, repetitive strain injury, etc. Explain the blog. ब्लॉग क्या होता है और उसकी कौन सी साइट जो हमें फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है. A blog is a discussion style site used by non-technical and technical users for creating the personal web page, and blog are similar to an online person diary and simple to use. We can use a blog to convey the message about the event, announcement, news, review, etc. Website where a person write regularly about topic that interested them with photographs or text. Some of the popular websites that offer the free blog services
जैसे कि wordpress.com, blogger.com, blog.com, vb.com, blogsome.com, tumblr.com, wix.com, joomla.com, medium.com, post.com, etc. Dash and control panel are used to customize the way your keyboard displays the mouse function, and that is accessibility option या ease of access option in control panel are used to customize the way your keyboard display mouse function. When a combination of hardware and software enable a person with disability or impairment to use a computer, it is known as. ऐसी कौन सी सेटिंग होती है जिससे कि जो जिन लोगों को डिसेबिलिटी है वो भी अच्छे से कंप्यूटर यूज कर सकते हैं. दैट इज ऑप्शंस आर मैकेनिकल असिस्टेंस, assistive technology, assistance and communication, and the right answer is assistive technology. Assistive technology, when a combination of hardware and software enable a person with disability or impairment to use a computer, it is known as assistive technology. Write short note on the following. Web browser. A web browser is a computer that stores websites, their related files for viewing on internet. And what is dial-up? Dial-up internet access is a form of internet access that uses the facility for public switches, switched telephone network, direct subscriber line, PSTN, DSL, to establish a connection to an internet service provider, ISP, by a telephone line using a device called modem. User dial a particular number provided by the ISP and gain the access of the internet. Write the short note. वाईफाई का शॉर्ट नोट बताना है. पहले वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी. ओके, तो वाईफाई means the wireless communication or wireless technology. It is a popular wireless technology that allow an electronic device such as computer, mobile phone to access the data wirelessly over a network, including the high-speed internet connection. Wi-Fi enable the devices such as laptop, personal computer, smartphone, video games, console, etc. can connect to the network resources. Okay, अब situation ले लेते हैं कि Vicky is a student of the class 10. He used to get the work based on the internet surfing, but he is not aware of the internet and terminology. Being a friend of Vicky help him to finding the answer of the following. अब उसको इंटरनेट की इतनी नॉलेज नहीं है ना, तो उसको बताना है. तो what do you mean by the ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? The full form of ISP is Internet Service Provider, and Internet Service Provider refer to the organization that can provide you the access to the Internet to somebody who pays the organization. For example, MTNL है, Jio है, जो कंपनीज हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं. B part is explain the following term. ये आप हमें टर्म दिया हुआ है WAP and W3. इसकी फुल फॉर्म बतानी है. WAP means wireless access point and W3 is www World Wide Web. Mention the 2 advantages of network. नेटवर्किंग के 2 फायदे बताने हैं. बहुत सारे हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो. For example, data sharing. One of the most important use of networking is to allow the sharing of data. Second, file transfer. User can send the text file, spreadsheet, document, presentation, audio, video, etc. to other user. Hardware sharing कर सकते हैं. Hardware components such as a printer, scanner, etc. can also be shared. For example, पूरी लैब में 10 प्रिंटर, हर कंप्यूटर के साथ 1 प्रिंटर तो नहीं रख सकते ना, तो क्या कर सकते हैं, 10 सिस्टम एक ही प्रिंटर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज IS, Internet Access Sharing. You can purchase a single internet connection and share it among the other computer. हर एक कंप्यूटर के अलग अलग नेट सर्विस तो नहीं खरीदी जाती ना, एक ही इंटरनेट सर्विस ली जाती है और बाकी स्कूल में या कॉलेज में सभी उसको यूज करते हैं वाईफाई से या वायर से. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन.
तो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन को भी यूज किया जा सकता है, सच एज वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, चैट एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, इस तरह के एडवांटेजेस हम यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज व्हाट इज ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, तो आपको ऑनलाइन ब्लॉग के बारे में बताना है। अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट used for non-technical or technical user for creating the personal web page. Blog are similar to an online personal diary and are simple to use. The advantage of offline blog is it can create first letter publish the content when an active internet connection is available. In which situation online shopping can be useful? Write to popular e-commerce website. ऑनलाइन वेबसाइट कब ज्यादा बेनिफिट होती है? व्हेन नंबर 1 अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट द स्टोर। सेकंड, विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन द परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। देखो ऑन विजिटिंग करें, अगर मार्केट में जाओगे तो वहां खाओगे पियोगे, ट्रैवलिंग पे भी खर्चा करोगे, ऑनलाइन में वो खर्चा आपका बच जाता है ना। तो कोई दो साइट जो हमें बतानी है, तो दो पॉपुलर साइट्स है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ये ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है जहां पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं। दूसरी है ईबे, ईबे में भी हम अच्छी सामान खरीद और बेच सकते हैं ना। डिफरेंशिएट बिटवीन द फिल्टर की और टॉगल की में क्या डिफरेंस है? फिल्टर की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल द कीबोर्ड टू इग्नोर द ब्रीफ रिपीटेड की स्ट्रोक मेकिंग द टाइपिंग इजियर फॉर द पीपल विद हैंड ट्रिमर। जिनके हाथ कांपते हैं, कई बार क्या होता है उसने बी प्रेस करना है तो वो गलती से 3 या 4 बार प्रेस हो जाता है, तो ये फिल्टर कर देता है, एक ही बार प्रेस होगा। टॉगल की, toggle key is an accessibility function which is designed for the people who have the vision impairment or cognitive disability. When toggle key is turned on, computer emits sound cues when the locking key जो लॉक की होती है, जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इस तरह की जब भी ऑन की जाती है तो एक जोर लंबा साउंड कंप्यूटर आपको देगा, जिससे जिनको भी विजन का या कॉग्निटिव इशू है उन्हें पता चल जाता है। ओके, इन डैश नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर हैव द इक्वल स्टेटस एंड ईच टर्मिनल हैज द इक्वली कंपोनेंट सिस्टम सीपीयू। तो ऑप्शंस आर मैन, वैन, क्लाइंट सर्वर, P2P एंड आंसर इज P2P, पीयर टू पीयर नेटवर्क। BSNL स्टैंड फॉर, BSNL की फुल फॉर्म बिहार संचार निगम लिमिटेड, भारत समाचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, none of the above, and the right answer is Bharat Sanchar Nigam Limited. Identify the website that offer the offline blog. Offline blog हमें कौन देता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस है ब्लॉगडेस्क, वर्डप्रेस, बोथ A और B, एंड ऑप्शंस इज ब्लॉगडेस्क और जो कोमा है ये दोनों ही ऑफलाइन है। डैश इज की यूज टू रिड्यूस अ रिपीटेटिव स्ट्रेन। रिपीटेटिव स्ट्रेन को कम करने के लिए कौन सी की यूज करेंगे? स्टिकी, सीरियल, माउस, टॉगल, एंड द राइट आंसर इज स्टिकी की। स्टिकी की से क्या होगा, कंट्रोल आपने प्रेस किया, कंट्रोल वहीं स्टिक होके रह जाएगा जब तक कि आप दूसरा ऑप्शन A, B यूज ना कर लो। डैश इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। सुनने में जिनको दिक्कत है तो उनके लिए कौन सी हम मतलब सेटिंग करेंगे? साउंड सेंट्री, हाई कंट्रास्ट, सीरियल की या शो साउंड, and the right answer is sound centric. Rahul has purchased some stationery item from an online site. He has to make online payment for the item, complete transactions. Okay, तो help him how to follow in the query. तो अब उसको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, अब उसको थोड़ी हेल्प कर दो। Suggest any 2 options he can use for the payment, his bill online. वो कौन से 2 ऑप्शन यूज कर सकता है? You can use क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कुछ भी यूज कर सकता है। ठीक है, नेम एनी 2 सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। 2 फायदे बताने हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। पहला कि विजिटिंग अ स्टोर मोर एक्सपेंसिव देन द परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, एंड सेकंड, प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट कैन आल्सो अवेलेबल इन द ऑनलाइन। तो जो हमें डिस्काउंट ऑनलाइन मिल रहा है वो हो सकता है लोकल में ना मिले, और हमारा जाने का, ट्रैवलिंग का, वहां जाके खाने पीने का वो खर्चा बच जाएगा।
कोई 2 ऑनलाइन साइट बता दीजिए. Name any 2 popular online transaction website, that is Flipkart, Amazon, Mantra, etc. Write the full form of COD in reference of online shopping. COD means cash on delivery. And last one is suggest any 4 good instant message. Rahul and Amit are working on a school project assigned to them by their teacher. They have to send instant message to each other and also do the video conference after school hour order to complete the project on time. Suggest any 4 good instant messaging software that they can use. राहुल और अमित को मिलके वीडियो कॉन्फ्रेंस करके एक प्रोजेक्ट तैयार करना है. उनको 2 इंस्टेंट मैसेज के सॉफ्टवेयर बताने 4. ठीक है, तो दैट इज गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडो लाइव मैसेंजर, रेडिफुल, MS टीम, जूम, व्हाट्सएप. राहुल और सेकंड इसका ऑप्शन है बी पार्ट इज अपार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर लिस्ट फॉर हार्डवेयर. कंप्यूटर नहीं चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर के अलावा 4 कौन से ऐसे हार्डवेयर चाहिए जिनसे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके. दैट इज हेडफोन चाहिए, स्पीकर चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, वेब कैमरा चाहिए. ठीक है. What do you understand by the ISP? ISP क्या होता है? Respect to a web application, name the 2 connections type of home users use. ISP, an internet service provider. ISP is an organization which provide you with access to the internet by dial-up, use modem or direct hardwire and wireless connection. DSL, cable, modem, dial-up, broadband, wireless, WiMAX, etc. Differentiate between the wired and wireless access. Give an example for each other. A wired setup uses a physical cable to transfer data between the different devices. Computer system wireless network does not use the wire for data or voice. वायरलेस में किसी भी तरह की वायर यूज नहीं की जाती, लेकिन वायर में वायर यूज की जाती है. ठीक है. वायर्ड के एग्जांपल हो गए डायल अप, DSL, केबल, इंटरनेट एक्सेस. और वायरलेस के हो गए 3G, WiMAX एंड वाईफाई. लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग. नेटवर्किंग के फायदे बताने हैं. डेटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन. Hope you understand all the topic very clearly. Don't forget to like and subscribe the channel and share with your friends. Thank you for watching.